Welcome to all in course Fundamentals of Behavioral and Social Science Research, Module 4 Quantitative Methods. And today we are going to deal types and steps of quantitative research. And this lecture will give you an insight about quantitative research and its significance in various fields. You will be able to identify and explain different types of quantitative research. You can understand by this lecture methodological approaches used in quantitative research, and you will be able to apply the knowledge of quantitative research by analyzing real world examples. And after starting this, in the beginning we can recall the concept of research. Research means to search new solutions or solutions for any problem. When we are talking about the quantitative research, it means here our data nature will be quantitative. It means numerical data we are going to use. Quantitative research is a systematic investigation that primarily deals with numerical data to understand patterns, relationship and trends. जहां हम न्यूमेरिकल डेटा को पैटर्न्स, रिलेशनशिप और ट्रेंड को समझने के लिए यूज में लाते हैं. It follows a structured methodology and statistical techniques to draw conclusions. Here are several types of quantitative research, each serving distinct purpose. As we all know about that, descriptive research, survey research, correlational research, causal comparative research, experimental research. These are general types of quantitative research, and in these researches we use the numerical data. Therefore, these are considered under the quantitative research. Previously, we have dealt descriptive research. It aims to systematically describe a phenomena, situation, or population without manipulating variables. It is often used in social science to gather data on demographic behaviors and preferences. Surveys and observational studies are common methods in this type of research. Descriptive research का motive ही है describe the what is in existence. So examples is also written below, that marketing firms conduct a nationwide survey to determine customer satisfaction level with a new smartphone model. तो अब यहाँ देखना है कि स्मार्टफोन जो मॉडल है, न्यू स्मार्टफोन मॉडल, उसके अबाउट लोग की क्या अपनी सेटिस्फेक्शन है लेवल. तो उसमें 10,000 या 1 लाख या 1,000 लोगों पे हम एक सर्वे कर सकते हैं अबाउट द वेरियस थिंग्स. तो दे कलेक्ट रिस्पॉन्सेज फ्रॉम 10,000 कस्टमर्स अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स, एनालाइजिंग देयर फीडबैक on features, price and usability. So this will be gives us a data, and that data will be in numerical form. So based on the results, the company adjusts its marketing strategy to better align with consumer expectations. So this can be this is describing only what is in mind of the stakeholders who are using the smartphone model. So this is description about the particular concept. Like that, survey research involves collecting data from a predefined group of respondents to gather information about their opinions, and descriptive research can be completed by the survey also. Here we are going to deal their opinions, behaviors or characteristics. It is widely used in various fields including market research, political polling and education. University administrators, an online survey to assess student satisfaction with online learning program. This is just like description, and survey is also used in the descriptive research. Correlational research. Correlational research examines the relationship between two or more variables to determine if a connection exists. However, it does not establish causation. कोरिलेशनल रिसर्च में एक रिलेशंस को तो हम आइडेंटिफाई करते हैं,
पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन और जीरो कोरिलेशन, बट व्हाई दैट, इसको हम नहीं पता लगाते हैं। तो दिस टाइप रिसर्च इज वाइडली यूज्ड इन साइकोलॉजी एंड बिजनेस स्टडीज टू एक्सप्लोर ट्रेंड्स एंड पैटर्न। Also examples here, a health research institute studied the relationship between physical exercise and mental well-being office workers by apply through questionnaires and tracking their physical activity levels. Researchers determined whether increased exercise correlates with lower stress and higher productivity. So this here is we are searching the relation between two or more variables. Now we are going to deal causal comparative or exposed factor research. This is known as exposed. जो इफेक्ट पड़ चुका है उसका अध्ययन हम करने के लिए जाते हैं, तो इसको एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च के अंदर कंसीडर करते हैं। और काजल कंपैरेटिव, कारणों का तुलना करना, तो चूंकि इफेक्ट पड़ चुका है उसके कारण क्या है, उस कारणों को जानने के लिए हम लोग इस तरीके के अध्ययन के साथ जाते हैं। और इट इन्वेस्टिगेट्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बाय कंपेयरिंग ग्रुप्स विथ प्री एग्जिस्टिंग डिफरेंसेस। रिसर्चर्स डू नॉट मैनिपुलेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बट एनालाइज देयर इम्पैक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली। वो इम्पैक्ट कैसे पड़ा, क्या कारण थे उसके, क्योंकि इसमें जो कोई मैनिपुलेशन हम नहीं करते, इफेक्ट पड़ चुका है इसलिए मैनिपुलेशन नहीं करना है, लेकिन वो प्रभाव किस तरीके से आए हैं उसको अध्ययन करने का प्रयास किया जाता है। तो हियर अ रिसर्चर इन्वेस्टिगेट्स वेदर स्टूडेंट्स हु अटेंडेड प्री किंडरगार्टन प्रोग्राम्स परफॉर्म बेटर एकेडमिकली देन दोज हु डिड नॉट by analyzing standardized test score from thousands of students across various schools. They identify potential long-term benefits of early education program. तो यहाँ ये हमें पता चलता है कि अगर कुछ ऐसे बच्चों का अध्ययन किया जाए और पाया जाए कि कुछ बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ बच्चे का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है, तो जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो अच्छा क्यों परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब एनालाइज करेंगे तो पाया गया कि जो अर्ली एजुकेशन प्रोग्राम से जो गुजरे थे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। इसका मतलब द पोटेंशियल, दे आइडेंटिफाई पोटेंशियल लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ अर्ली एजुकेशन प्रोग्राम। तो वो कारण हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं जिसका प्रभाव हमें दिख रहा है। तो दिस कैन बी अंडर एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, यस, previously we have dealt it. It is the most rigorous form of quantitative study as it establishes causation through controlled experimentation. This approach involves manipulating independent variables and measuring their effects on dependent variables. Randomized controlled trials are a common examples. So, examples are here. A pharmaceutical company conducts a clinical trial to test a new diabetes medication. Participants are randomly assigned to either the treatment group or the control group. Over 6 months or a time period, researchers monitor blood sugar levels and other health markers to determine the drug's effectiveness compared to the placebo. तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें कंट्रोल ग्रुप और ट्रीटमेंट ग्रुप आइडेंटिफाई करते हैं, या जरूरत नहीं हुई तो हम एक ही ग्रुप पे उसका बेस लाइन देखकर कोई ट्रीटमेंट देते हैं। आफ्टर दैट वी असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ दैट प्रोग्राम और मेडिसिन, जो कुछ भी हमें करना है। तो बाय द ट्रीटमेंट, बाय द मैनिपुलेशन ऑन ए ग्रुप we get the results, so that will consider as a experimental research. Quasi experimental research is similar to experimental research but lacks random assignment, making it less controlled. It is often used in educational and social sciences where randomization is impractical or not possible. तो जहाँ पे जैसे कि 2 कक्षाएं, हम एजुकेशन की बात करें तो 2 कक्षाएं अगर ले रहे हैं और दोनों कक्षाओं को हम मान लेते हैं कि एक जैसे हैं, क्योंकि हमने जो टेस्ट लिए उस टेस्ट पे दोनों बच्चों ने एक जैसा मार्क्स रिसीव किया होगा, लेकिन उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम एकदम एक्यूरेटली मेजर करके कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं कि दोनों का जो दोनों ग्रुप का लेवल है वो एग्जैक्टली सेम है। तो हियर इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दे आर नॉट मटेरियल एंड वी कांट कंट्रोल देयर ऑल एट्रीब्यूट्स एट द सेम लेवल और सेम स्किल्स। तो देयरफॉर वी प्रोसीड फॉर द क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च।
क्वांटिटेटिव रिसर्च के जो स्टेप्स हैं उन पे हम लोग बात कर सकते हैं कि आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स, तो वी सेलेक्ट अ टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट बेस्ड ऑन गैप्स इन एग्जिस्टिंग लिटरेचर, जो रिव्यू करते हैं और अपने इंटरेस्ट के बिहाफ हम जाते हैं और देखते हैं कि जहाँ सबसे कम काम हुआ है या जो हमारे इंटरेस्ट को शो कर रहा है और लगता है कि दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द कम्युनिटी और टू फिल द नॉलेज गैप, तो we select the topic. The problem must be measurable and researchable. It put in our mind. Reviewing related literature after that also. Analyze previous research to understand theoretical framework and variables, helps in avoiding duplication and refining the research focus. And our review we can go Google Scholar, Eric JSTOR and library. After that, we frame the research questions and then guide the direction of inquiry. After that, we formulate the objectives, hypotheses, and research questions. And objectives gives us what is our work, clear goals of what the research institute to achieve. Hypothesis, predictive statements, null and alternatives. So here, in the quantitative research, we make the hypothesis and test the hypothesis, and after that we define the variable and operationalizing concepts, and it can also be we consider before the objectives and choosing the research design. We proceed for the research design because what should be research design: descriptive, experimental, quasi-experimental, correlational, ensure control and validity, also selecting population and sampling techniques. What will be our population, target population, choosing sampling technique, random stratified cluster, sample size, impacts reliability and generalizability. Developing research tool, because tools are the means to gathering data, and these are very important in the field of research. Without tool we cannot gather the data. The tools include questionnaire, test, training, rating scale, interview, schedule, checklist, etc. And we should also ensure the reliability and validity of tools. And after that, we gather the data and following ethical consideration, informed consent, confidentiality. Tools should be pilot tested. Data must be recorded accurately and systematically. So these are the concepts which are associated with the quantitative research, and after that we analyze and interpret data by the use of statistical techniques, using descriptive and inferential statistics. Descriptive mean, median is SD, inferential test, t-test, ANOVA test, etc. And interpretation links data to hypothesis and theory. Now after the analysis, reporting is required, and reporting is very important in the field of research. What, how, what are the objectives, what were the hypothesis. According to objective or hypothesis, we report the thesis, or we go for reporting. So presenting findings in the form of statement and graphs, tables, chart, enhance that strengthen the understanding. So here we have deal the quantitative research and quantitative types of also. Quantitative research serves a unique purpose, helping researchers analyze data and draw meaningful conclusion based on empirical evidences. Quantitative research follows a systematic process to investigate problems using numerical data and statistical analysis. The key steps include identifying a research problem, reviewing literature, formulating objective and hypothesis, defining and measuring variables, selecting a research design, sampling, developing tools, collecting data, analyzing results, and reporting findings. So these are the key steps. Each steps build logically on the previous one to ensure objectivity and accuracy. Quantitative research
is more reliable for the everyone, because this have the replicability and anyone can test this the findings results, and therefore we can generalize the findings of the quantitative research. Quantitative research is helpful for the policy development because that is based on the survey, and our policies जो योजनाएं बनती हैं, सरकार बनाती है किसी भी क्षेत्र के लिए, तो सर्वे के आधार पर ही बनाती है, वहाँ की डिमांड क्या है और हम क्या वहाँ पे सप्लाई करें। तो इस तरीके से, जैसे कि अगर सिंपली हम बात करें कि अभी भी जो राशन गांव में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो राशन कार्ड कितने लोग हैं, घरों में कितने मेंबर्स हैं, उसका ऑथेंटिकेशन करके, वो सर्वे करके उस पर्टिकुलर गांव में या उस ब्लॉक में उतना अमाउंट मात्रा में वो राशन, गेहूं, चावल या जो भी डिस्ट्रीब्यूट करती है वो भेजती है। तो वो ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च पॉलिसी है। या एजुकेशन का एनरोलमेंट कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट अपना एक अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट करती है कि कितना मद जो है इस एजुकेशन के सेक्टर में खर्च किया जाएगा, तो दैट इज असेस्ड, प्री असेस्ड, क्योंकि वो असेस करके तब उतना वो मद खर्च करने के लिए तैयार करती है। तो these all issues are considered by the only quantitative research, because quantitative research is helpful for the all sectors which are associated for the government rule or government ruling, वो जो जहाँ सरकार अपना नियंत्रण और अनुशासन रखती है और वो उसका खर्च स्वयं बियर करती है। इवन एक अगर हम कहें कि समाज को दिशा भी देना है तो क्वांटिटेटिव रिसर्च के थ्रू जनरली आता है, जहाँ पे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं और ज़्यादा लोगों के लिए कोई पॉलिसी निर्मित करनी है, तो उसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ आप सोच सकते हैं कि अगर इसको और गहराई से सोचना चाहें तो कैन यू थिंक अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम दैट कुड बी एनालाइज्ड यूजिंग कोरिलेशनल रिसर्च? What challenges might researchers face when conducting experimental research in a business test setting? What are the steps of conducting quantitative research? तो इनको जब आप गहराई से सोचोगे तो आप क्वांटिटेटिव रिसर्च की अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी बन सकेगी, और उसको बेहतर समझने के लिए आप कुछ रेफरेंसेस के साथ जाएं, इन किताबों को पढ़ें और इन किताबों से आपको एक अच्छी इंसाइट मिलेगी। ओके, थैंक यू टू ऑल फॉर दिस लेक्चर। वी विल meet in next lecture.